Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you feeling today? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class that is in English for grade 5 and we are learning unit number 7 and its title is Climate Change. So my dear students, it's our new unit, new lesson we are going to start. So yes, my dear fellow teachers, I have divided this chapter according to these lessons, okay, according to these lectures. This is our complete chapter lesson plan. So let's see what we will do in our lecture number 1. In our lecture number 1, we will learn about grammar in definite and indefinite article on page number 54. And its SLO will be, my dear teachers, recall and apply the rules for the use of a and differentiate between the use of definite and indefinite article, write sentences of their own using correct capitalization, punctuation and spelling. So this will be our first lecture. In our lecture number 2, under the title of grammar, we will learn about transitional devices and joining words. Already these are given on page number 55 and 54. And its SLO will be use transitional devices, therefore, however, whereas, for example, recognize the function of more joining words such as, for example, for instance, to introduce and give example, etc. So this will be our second lecture's SLOs. In lecture number 3, my dear teachers, under the title of pronunciation skills, we will learn about consonant clusters on page number 53. And its SLO will be classify words that begin or end with the same consonant clusters. In our lecture number 4, we will learn about reading and comprehension skills. Page number 51, 52 and 53 we will cover up, my dear students. And its SLO will be use pre-reading strategies to predict the context of the text from topic or pictures. And other SLO, scan the simple text for specific information. So in our lecture number 5, under the title of listening and speaking, we will get about leave taking, how we can leave, on page number 55. And its SLO will be demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to take leave. So yes, my dear students and my dear teachers, in lecture number 6, what we will read? We will read about tables and charts. Already that we have learned there are tables and charts on page number 56. And its SLO will be read tables and charts in textbooks. In lecture number 7, under the title of punctuation in writing, we will see that how we can use on question number 11, page number 57. So we will see how we can punctuate different types of writing, different pieces of writing. And its SLO will be write sentences of their own using correct capitalization, punctuation and spelling. In lecture number 8, we will learn about 24-hour clock format. Question number 12 on page number 57. And its SLO will be locate specific information in a 24-hour clock, digital analog. And in our lecture number 9, my dear students, we will learn about paragraph writing. Question number 13 will be there on page number, we will cover page number 58. We will learn about paragraph writing, how we can write a paragraph, and its SLOs will be show relationships between sentences in a paragraph and between paragraphs. Analyze a simple paragraph to recognize that a paragraph comprises a group of sentences that develop a single main idea. The main idea of a paragraph is given in the topic sentence. Other sentences in the paragraph supports the topic. Write a guided paragraph using ideas gathered and organized through various strategies. So these all we will cover in our this chapter. Total lecture 9 will be, my dear teachers, and I have already shown you SLOs that how we will cover step by step. Okay, so now open unit number 7, my dear students. Unit number 7, climate change. We are going to start page number 51. So have you opened? Climate change का क्या मतलब होता है बेटा? Climate change mean आबो हवा की तब्दीली. आबो हवा कैसे तब्दील होती है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओपन पेज नंबर 52. स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट स्टेंजा. ओके, सो सी देयर. आर यू रेडी नाउ? गुड.
leading the fight against climate change, lots of obstacles that we will face. Global warming is coming soon, but we'll still see the sun and moon. जी बेटा, तो ये पहली 4 लाइनें पोम की हमें क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं लीडिंग द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट आबो हवा की तब्दीली के उसमें हमारी मुसलसल जंग हो रही है। वो कैसे? लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स दैट वी विल फेस, कि कमिंग टाइम में हमें बहुत सी जो है ना परेशानियों का सामना करना पड़ना है, रुकावटों का सामना करना पड़ा है क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा किरदार किस चीज़ का है? ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बेटा? ये सूरज की शुआओं को, जो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द एक खौल है, ओके, एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो सूरज की जो नुकसानदेह शुआएं हैं उनको ज़मीन पर आने से रोकती है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वो जो ओजोन लेयर है आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होना शुरू हो जाती है? पतली बारीक होना शुरू हो रही है। तो उसकी वजह भी है क्योंकि हम दरख्तों को काट रहे हैं, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। हम प्लांट्स नहीं उगाते हैं, दरख्तों को काट, मुसलसल जो हमारा काम हो रहा है वो हमारा दरख्त का कटाव है, जिसकी वजह से हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। So next, what about our plants and trees? Mother Earth needs some peace. On top of the trees are some honeybees. Lovely birds sweetly sing. तो इस स्टेंजा में हमें क्या बताया जा रहा है? What about our plants and trees? कि हमारे पौधों और दरख्तों के बारे में क्या है? आपका क्या ख्याल है? क्या आप कहते हो कि पौधों और दरख्त क्यों? क्योंकि हम तो मुसलसल उनको काट रहे हैं। तो हमारी ज़मीन को, जबकि हमारी ज़मीन को पौधों की, सब्ज़े की, दरख्तों की ज़रूरत है और ये हमारी नीड है। इवन हमारी नीड नहीं है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के परिंदे भी हैं जो वहाँ रहते हैं, गाना गाते हैं, बैठते हैं, स्वीट सॉन्ग गाते हैं, इतनी सुरीली आवाज़ में बोलते हैं। तो वो उनकी भी रिहाइश की एक जगह है जो हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, और ये हमें नुकसान की तरफ, एक बड़ी तबाही की तरफ लेके जा रहा है। Global warming might be near, climate change is already here. There is a lots of things we can't resist, the lovely earth that we should kiss. Okay? अब वो बता रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मीन ये जो आहिस्ता 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 ज़मीन की जो लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता बारीक होती जा रही है, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है वो वक्त कि हम किसी बड़ी परेशानी का हमें सामना करना पड़ जाएगा। ओके? और पूरी रोए ज़मीन में रहने वाले जितने भी हैं, क्योंकि वन एंड ओनली अर्थ है बेटा जिस पे ज़िंदगी जो है ना जन्म लिया है ज़िंदगी ने, जहाँ लाइफ है, क्योंकि यहाँ सूटेबल थिंग्स थी, हवा थी, पानी है, तो इसलिए जो है ना ये सूटेबल चीज़ें हैं जो हमें ज़मीन पे मिली हैं, तो हमें इसकी केयर भी करनी चाहिए। ओके? लेट अस सेव आवर मदर नेचर, लेट अस मेक इट इन अ परफेक्ट स्ट्रक्चर। लाइफ इज़ प्लेजेंट हियर ऑन अर्थ, डोंट लेट डिजास्टर बिकम हर बर्थ। गॉट इट? अब वो लास्ट में हमें क्या कह रहे हैं? वो कह रही है कि आपने, हम आए अहद करते हैं, हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि हम अपनी जो ज़मीन की फितरत है, ज़मीन है, उसकी हम क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे। तो हम उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? उसकी हिफाजत हम कर सकते हैं बेटा, हम उसे आलूदगी से बचा सकते हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, वो हमारी हवा को आलूदा कर रहा है। हम चीज़ें हैं जो आलूदगी कैसे फैला रहे हैं, हमारे कारखानों का गंदा वेस्ट मटेरियल है वो हम अक्सर पानी में गिरा देते हैं, जहरीला मटेरियल होता है जो हमारी लाइफ को, वहाँ हमारी आबी ज़िंदगी को, वाटर एनिमल्स हैं जो उनको नुकसान पहुँचाता है। ओके? तो इस तरह, और जब हम दरख्त काटते हैं तो ये तो बहुत बड़ी तबाही है, जिसकी वजह से इवन वी नो दैट वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी नीड एयर। ओके? और एयर के लिए हमें फ्रेश एयर चाहिए, और फ्रेश एयर हमें तब मिलेगी जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त होंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त होंगे तो हमारी ज़मीन भी महफूज हो जाएगी। तो इस पूरी पोम में हमें एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमें केयरफुल होना चाहिए, अलर्ट किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो ऐसी रखनी चाहिए जिससे हमारी आने वाली नस्ल को भी फ़ायदा हो, वो भी नुकसान ना उठाएं, और ये ज़मीन भी महफूज रहे। ओके? तो समझ आ गई मेरा बेटा आपको? ये हमारा आज का लेक्चर था हमारा, जो आज हमने कंप्लीट किया इसको। कल हम अपने एक न्यू लेक्चर के साथ आएंगे। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।